नमस्ते साथियों, आशा करते हैं कि आप, आपके सभी बच्चे, स्टूडेंट्स और आपका परिवार स्वस्थ होगा। मैं प्रज्ञा फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ विद्या भवन सोसाइटी उदयपुर के मंडे म्यूजिक्स पब्लिक सीरीज के छठे भाग में। साथियों, विद्या भवन सोसाइटी एक एजुकेशनल फोकस्ड एनजीओ है जो उदयपुर में 1931 में डॉक्टर मोहन सिन्हा मेहता द्वारा स्थापित हुआ। आज विद्या भवन 10 एजुकेशनल संस्थाओं का समूह है, जिसके अंतर्गत हम लगभग 3500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और कुछ 10,000 स्टूडेंट्स से भी ज्यादा के साथ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इन 10 संस्थाओं में हमारी 3 स्कूल्स और 4 कॉलेजेस शामिल हैं और इन सभी 10 संस्थाओं में लगभग 500 स्टाफ कार्यरत है। विद्या भवन की एक नई पहल है मंडे म्यूजिक्स, जिसमें हमारा आज का सत्र फोकस करता है मैं भी आप सब जैसी ही हूँ, अंडरस्टैंडिंग रोल ऑफ कम्युनिटीज इन सपोर्टिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, जिसमें हम एक्साइटेड हैं कि इस सत्र के स्पीकर और एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ देवांगना मिश्रा जुड़ी हैं। देवांगना, आपका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। देवांगना ने 2009 में टीचर्स कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डुअल एमए किया है, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और न्यूरोसाइंसेस में। तब से इन्होंने कई देशों, क्षेत्रों, स्कूल, कल्चर्स, ट्रेनिंग टीम्स और एजुकेटर्स के साथ काम किया है, करिकुलम, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटी, सिस्टम्स, स्टाइल्स और स्ट्रक्चर्स जैसे कई एस्पेक्ट्स पर, ताकि ये फैसिलिटेट कर पाए कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में संपूर्ण है, यानी एक होल है। ये डेज़ियर्तो फ्लोरिडो नामक किताब की ऑथर भी है, जो कि कविताओं की किताब है, जो रिप्रेजेंट करती है हजारों की आवाज को। इसी के साथ ये वाई कॉम्बिनेटर से भी जुड़ी हुई है, जो गिफ्टेड बच्चे जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं, उनके साथ कार्य करती हैं और अपने अनुभव और क्रिएटिविटी को प्रोक्योरमेंट लीग में एशिया कम्युनिटी एंगेजमेंट हेड करने में प्रयोग करती है। We welcome you, Devangana, and over to you now. Thank you so much. Really good to be here. I'm just curious, are we going to have like more people join? So कुछ जुड़ते रहेंगे बीच में. There are people who are already there attending the YouTube webinar live. Got it. Okay, understood. Amazing. All right, namaste. Really good to be here. Really exciting to be here. And what I'm going to do is अगले आधे से पौन घंटे के लिए मैं आपसे बातें करूंगी कि डिसेबिलिटीज क्या होती हैं, किस तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं, और हम कैसे कम्युनिटी ऑफ एजुकेटर्स और कम्युनिटी ऑफ टीचर्स और like other people और just like regular people जो कम्युनिटी में रहते हैं, हम कैसे डिसेबिलिटीज के साथ लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं. So I'm going to share my screen. कहीं पे मतलब what is the best way to see questions or to see people, or like if I want to engage with the crowd? So you have to switch on the YouTube link as well. You can simultaneously open the window. I can reshare the link with you on WhatsApp. So that please, if you can, that would be amazing. I've shared the link with you. Okay. So now what should I do? Teach me. Open. So in the second window, you can open the link. So maybe I should have 2 windows open. Yeah. Is that right? Yes. Okay. Okay. So in the second window,
Also, if you can like keep the YouTube video on mute, otherwise the sound will, you know, disturb. Now it's fine. Yeah. Because I've muted that and I've just got this. So you can see the chat box now. Yes, yes, yes. Perfect. Okay. All right. I'm going to quickly share my screen. Can you give me screen sharing? Awesome. Second. Can you see my screen? Okay. Amazing. Amazing. Big. All right. Supporting children with disabilities with Sameet Shala and Vidya Bhawan and like all of you lovely people here. So what I'm going to do is मैं अगले आधे पौन घंटे के लिए I'll take you through some slides. आप लोग chat box में you can put your answers. And guys, if one of you can just keep prompting me because I can't see both windows, so you can keep giving me whatever people say. So जब मैं स्लाइड शो के थ्रू जाऊंगी, जितने भी लोग बोल सकते हैं और अपना ओपिनियन दे सकते हैं वो प्लीज देना, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो डेमोक्रेसी है, वो हमेशा सॉरी विद्या भवन सोसाइटी में इतने सारे अलग अलग तरह के करती रहती हूँ प्रेजेंटेशंस की, कंफ्यूजन हो जाता है. सो हमारा इंडिया कैसे बना है? खूब सारी कल्चर्स, रेसेस, रिलीजन्स की वॉइसेस से. हमारा रिलीजन्स कैसे बने, हमारे विलेजेस कैसे बने, हमारे कम्युनिटीज कैसे बनी है. खूब सारे जब लोग अपने ओपिनियन, पर्सपेक्टिव, थिंकिंग शेयर करते हैं, तब जाके हमारा कंट्रीज, सोसाइटीज, कम्युनिटीज, फैमिलीज बनती है. तो अगले आधे पौन घंटे मैं चाहूंगी आप सब लोग फैमिली, कम्युनिटी की तरह एंगेज करें, क्योंकि तभी हम बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं जब हम एक दूसरे की बातें सुने और आंसर्स करें. ओके, सबसे पहले हु एम आई. मेरा नाम है देवांगना मिश्रा. मेरी फैमिली में सब बहुत ही बचपन से, जैसे जब से मैं पैदा हुई थी तब से मैंने देखा था बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं. कोई गाना गाता था, कोई डांस करता था. मेरा ब्रदर जब 3 साल का था तब वो जगजीत सिंह की गजल्स गा सकता था, डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ सकता था. तो बहुत सारे, मेरे पापा पेंट करते थे, ये वो. तो खूब सारे मेरे घर में गिफ्टेड लोग थे. और मेरे मम्मी पापा ने कहा तुम्हें जो भी करना है जिंदगी में करो. तो मेरी मम्मी साइकोलॉजिस्ट है और हमारे घर पे डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चे आते थे, ऑटिज्म के बच्चे आते थे, डेफ एंड डम्ब स्कूल से बच्चे आते थे. तो मेरी मम्मी उनको पढ़ाई कराती थी और मैं उनके साथ खेलती थी. किसी के साथ क्रिकेट खेल लिया, किसी को बुक पढ़ ली, किसी को अपनी बर्थडे पार्टी में बुला के खूब फ्रेंड्स के साथ बिठा दिया. तो मैं बस इन बच्चों के साथ खेलते खेलते बड़ी हुई. और जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुई, LSR लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली में, तब मैं एक लड़के से मिली जो 19 इयर्स का, मतलब जो 12-13 साल का था, वसंत वैली स्कूल दिल्ली में. और उसके बहुत सिवियर ऑटिज्म था. तो जैसे जैसे असेंबली में जब बैंड प्ले करने लगा, वो बहुत तेज चिल्लाने लग गया और अपनी कान बंद करके मतलब सारे बच्चों को अटैक करने लग गया. तो उसको उन्होंने हैंडकफ किया और उसको ऊपर ले गए और उसका नाम था साहिल. तब से मैंने कहा कि इस चीज की प्रॉब्लम क्या है, ये क्या होता है ऑटिज्म. और फिर मैं गई न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी और मैंने वहां पे पढ़ा ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, न्यूरो साइंसेस, ये सारी चीजें. और उसके बाद मैं इंडोनेशिया में, न्यूयॉर्क में, हांगकांग में स्कूल सिस्टम्स, एजुकेटर्स के साथ काम करती आई हूँ. और जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तब उनका माइंड मैल्लेबल होता है, प्लास्टिक होता है. तो मतलब अगर उन्हें पढ़ाओ, उन्हें अच्छी तरह से, उनसे प्यार से बातें करो, उनको सिखाओ, तो जो भी उनके अंदर कमी होती है वो काफी तरह से पूरी होने लग जाती है.
तो मैंने ये सारा काम खूब सारे लर्निंग डिसेबल्स के बच्चों के साथ किया, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, अलग अलग तरह की नीड्स के जो बच्चे मेरे साथ आते थे, मैं उनको खूब दिल लगा के पढ़ाती थी, या तो हिस्ट्री या साइंस या मैथ्स या म्यूजिक या डांस या थिएटर, जो कुछ भी, और उनको होल ह्यूमन बीइंग्स बनाती थी जब से वो छोटे बच्चे थे, ताकि जब वो बड़े हुए, सोसाइटी उन्हें कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वो टूटे नहीं। तो मतलब ऐसा उनके अंदर होल बना सकते हैं बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, कि जब वो बड़े हुए तो बिल्कुल मतलब कोई उन्हें तोड़ नहीं पाए, है ना। तो वो होता है, वो है मेरा काम पिछले 10-15 साल से। इन 2018 आई मूव टू इंडिया, एंड टीच फॉर इंडिया एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन पे फोकस करती है। मैं वहां पर आकर उनकी सीनियर लीडरशिप टीम पे थी, उनकी लीडरशिप टीम पे थी, मेरी बहुत बड़ी टीम थी, 30 टीम मेंबर्स की। तो मैं उन सबके साथ काम करती थी, और 5 महीने पहले मैंने वो छोड़कर फिर से ऑटिज्म बच्चों के साथ काम करना शुरू किया है। तो अब मैं फिर से बच्चों के साथ काम करती हूँ उनको सोसाइटी में इंक्लूड करने में। पर आज हम मेरे बारे में बात कम करेंगे एंड ज्यादा बात करेंगे व्हाट इज एक्चुअली अ डिसेबिलिटी। तो अगर आप 2 मिनट ले सकते हैं और सोचिए आपको क्या लगता है डिसेबिलिटी क्या है, और आप या तो फिर चैट बॉक्स में डालिए या अनम्यूट करके अगर बोलना चाहे तो अनम्यूट करके बोलिए। मैं देखती हूँ जिस कोई भी आंसर, व्हाट इज अ डिसेबिलिटी। मैं 10 सेकेंड्स वेट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे ले जाती हूँ। ओके, so I will take this forward. Let's skip this. Sorry. Are there any answers yet on what is a disability? Anyone who wants to put in chat, what is a disability? I love that. What a physical or non-physical condition that could happen, hamper a person's life. Lovely. What else? Anything else that you guys can think of? What is a disability? Totally. Disability is something, thank you. It makes it difficult to do something which others can do easily. I love that. One last answer and then I'll move on. Anyone? Okay. Are there any more answers on that? What is a disability? चलिए ठीक है. So how I define a disability is, जब मैं बच्चों को क्लास में ही पढ़ाती हूँ, मैं उनको हर वर्ड को ब्रेक करना सिखाती हूँ, right? So ability में जब हम dis add करते हैं तो disability हो जाता है. जैसे ही हम dis हटा देते हैं तो ability हो जाता है. तो मतलब anything जो हमें hamper करती है कोई चीज करने से, उसको disability बोलते हैं. जैसे मेरे को बहुत भूख लगी है पर घर में खाना नहीं है, right? So that is, I want to eat food, but there is no food at home. So what I do about it is either I learn cooking, or I'll earn more money so that there's always food at home, or I steal food from someone's house, right? So like every time something that stops us from getting to something is called a disability, and it can get very frustrating, right? Like imagine, think about it, you're very thirsty,
but there is no water to be found anywhere. You're stuck on a desert. My book is about that, right? Like my book, Desierto Florido, is basically about stories and stories and stories of women and men who have aspired to have something, and then circumstances or whatever have stopped them. और आप कैसे उनको navigate करके उस disability को ability बनाते हो, that is rising, that is the eruption of genius in my book. So जब disability होती है कि मैं पानी है यहाँ पे पी लूं, disability होगी कहीं घर पे पानी ही नहीं है, पूरे बैंड्रा पूरे एरिया में मेरे पानी नहीं है, how I use my brain and body and mind to figure out पानी कहाँ से आए. That is how I make a disability an ability. But unfortunately, life is more complicated than pani. So let's talk about what are the different kinds of disabilities, right? Let us list all the every disability that you can think of. Take a minute to list it in the chat box. YouTube के chat box में अगर आप डाल सकते हो, दुनिया में किसी भी तरह की disability आपके सोच सकते हो आप, और मैं यहाँ पे उसकी लिस्ट बनाऊंगी. sorry. आप YouTube के चैट बॉक्स में लिखो anything that's incomplete is a disability. अब बताइए क्या क्या आपके दिमाग में जब आप disability सोचते हो क्या क्या नाम आते हैं? मैं यहाँ पे लिखूंगी. Autism, Down syndrome, dyslexia, amazing. Autism, Down syndrome, dyslexia, anything else that you can think of? Learning disabilities, awesome. All kinds, right? Like dysgraphia, dyspraxia, whatever. Anything else? Crohn's, oh yeah, for sure. There is Crohn's. There is Tourette's. Or kuch. I'll take one more and then I'll move on. One last. Totally, physical disabilities are a lot, man. Okay. Now, thank you guys for sharing, because as I said, our community is made of speakers and I love it when the audience helps me out. This is amazing. Okay, so these are some of the disabilities, but actually like the disabilities are unbelievable, right? Like you're born with sometimes what is a word we don't use anymore, but mental retardation, where you're intellectually massively low, and all of these slow learning, there's all kinds of things, right? So let's think about, these are our kids. When they're born, they all look different, they all sound different, they all have different strengths, they all have different weaknesses, they have different personalities right from the time babies are born, right? Like when you'll see a baby, at like 3 or 4 months, you actually start to see little personalities in them, and people will be like, "Ye to mummy pe gaya, ye to papa pe gaya," and sometimes you're just like, "Pata nahi kis pe gaya," like, right? Like you can't understand what is their personality at all. So that is sometimes what, like, we start seeing differences very early on. Children with autism might not make any eye contact after age 9 months or 10 months. Children with Down syndrome will be born with certain features. Sometimes things like physical disabilities, like a blindness or a childhood deafness or dumb, and all of these things are things children are born with.
So there are all kinds of abilities and disabilities that our children are usually born with. Sometimes you'll see a 10-month-old child like just like drum really beautifully. Sometimes you'll see a child like fiddling with Lego on the side when he's just like 1 year old. Sometimes you'll see a child not speak till the time they're like 2-3 महीने के हो गए, मतलब 2-3 साल के हो गए, बोल ही नहीं रहे और फिर एकदम से बोलने लग जाएंगे, right? So you see all kinds of difference in children. As educators, as parents, as people in the medical profession, कभी-कभी हम बहुत hyper हो जाते हैं कि 9 months हो गए, इसने चलना नहीं चालू किया, इसको दवाइयों पे ले जाओ, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ. कभी कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ सोचते ही नहीं है, करते रहो बेटा, जो करना है करो, राइट? लाइक all kinds of society, all kinds of parenting occurs in these children who are born, right? Some are disabled, some are not disabled. Sometimes they'll see ये तो बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है मेरे को बच्चा, मैं अभी से इसको बुक्स पढ़ना चालू कर देती हूँ, 2 साल का है, एंड पेरेंट्स बैठ के encyclopedia पढ़ रहे हैं, and then the child starts to like suddenly grow into bigger than what they actually are. Sometimes the child could be very intelligent, the parents might not even notice it, right? So there's all kinds of things that go on in our society. Sometimes like a child could just be completely like not speaking because they're not stimulated to speak at all, and then like suddenly something will spark them and they'll start to speak. So there's all kinds of things. Sometimes a child could be very intelligent, but they're put in a school which is actually way below their intellect level. तो वो बिल्कुल मतलब ट्रॉमेटाइज हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सब बच्चे बुली कर सकते हैं कि तुम क्लास में हमेशा आंसर क्यों देते हो, हाथ के ऊपर करते हो, and that could cause a child to get traumatized early on and get repressed. So बहुत अलग अलग तरीके हम बच्चों में चीजें देखते हैं जो बड़े होके मैनिफेस्ट होती रहती है. So today what we're going to talk about is, as a community of educators and other people who just live in the society with all kinds of diversities, how I'm not going to talk about adults at all, right? Because adults are grown people with grown minds. न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है जब बच्चों का माइंड जो बहुत मैल्येबल होता है उसको किसी भी तरह से हम शेप कर सकते हैं. नर्चरिंग, नेचर, सोसाइटी, किस स्कूल में डालो, किस तरह की बुक्स पढ़ाओ, इस सब से हम उसको शेप कर सकते हैं, राइट? सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ डू वी हेल्प आवर किड्स फिट इन या स्टैंड आउट, राइट? लाइक कभी कभी कुछ पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ है, मैं उसको सुपर मॉडल बना देती हूँ. कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होते हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं मैं इसको कैसे छुपा के रखूं ताकि कोई देखे नहीं, राइट? सो वी डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टू make our kids either fit in or stand out when they are a little different from everybody else, right? So what I would love to do is I will share some examples with you of people, men and women, who were born with disabilities, right? Top left, this is a woman who is a Victoria's Secret model today. ये डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुई थी, आज ये मॉडल है. उसके पास सब लोग, आप लोग जानते हो, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन है, हाईली गिफ्टेड साइंटिस्ट ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑटिज्म. इसके पास यहाँ पे is Van Gogh had made this. This is one of his most well-known paintings, but he had like all kinds of schizophrenia, autism, all kinds of mental, physical, emotional disabilities that manifested in a lot of great art, beautiful art. Uske paas you can see Susan Boyle, who's a beautiful singer and like just like doing amazing things. Was again born with like a lot of inherent disabilities of all kinds. If you look her up, you will see. There's all kinds of people. There's Ray Charles, he was born blind. There's a man called Nick Woolshick here. He was born with like no limbs, or like I think they got cut in an accident, if I'm not wrong. But like he's done TED Talks about how do you stay resilient, how do you keep going. This is his family, these are his kids. We've got Hannah Gadsby, a famous comedian on the spectrum of autism. So we've got all kinds of people. Elon Musk has claimed openly that he has Asperger's and broke ties with his family, and now he is
a big multi-billionaire, right? Donald Trump, we say that he's on the spectrum of autism. Again, we see what he's doing. So our society is filled with adults who are very big, famous, strong, who were actually born with some kind of neurodiversity. उनमें कुछ अलग था, कुछ अलग सोचने की कामना थी, ताकि वो बड़े होकर ऐसे हो गए. पर जब वो बच्चे होते हैं हमें समझ नहीं आता है ना. तो जब हम बच्चे होते हैं इनको देखते हैं हमें लगता है अजीब है, क्या कर रहे हैं, कैसे फिट इन करेंगे, कुछ अच्छा करना चाहिए, क्यों ऐसे पागलपंती कर रहे हैं, है ना. और फिर हम उनको दबा देते हैं बढ़ाने की जगह. अगर मतलब आइंस्टाइन बिना कपड़ों के रोड्स पे भाग रहा था, अगर हमारा बच्चा ऐसा करेगा हम उसको 2 थप्पड़ मार के बोलेंगे कमरे में बैठो. पर अगर हम उसको रोके नहीं और उसको खोल के मतलब बड़ा होते रहने दें, तो कभी कभी बड़े होके बहुत बड़े जीनियसेस हो सकते हैं. तो हमारा रोल as educators, as people who are in the community, is how do we encourage disabilities as the community, and as educators how do we facilitate disabilities in a manner that they become strengths rather than weaknesses, है ना. आज जब नरेंद्र मोदी को देखते हैं, like all kinds of, अमित शाह को देखते हैं, all of these people, they're strong big men who stand their ground and who don't move, right? And like Narendra Modi used to be a chai wala, and today he is the prime minister of one of the biggest democracies in the world. So why can't we have that abundance mindset for some of our children who think in different ways, or who act in different ways, or whose bodies and minds and emotions work in different ways? Okay? So today let's like really think about how, as teachers, how as a society, how as India can we see कि हमारे जितने भी अजीब गरीब बच्चे हमें दिखते हैं, जो हमें लगता है ओहो बेचारे क्या हो गया, हम कैसे उनको encourage करके ऐसा बनाए कि इंडिया का अगर हम रोड मैप देखें तो इंडिया will be full of big and famous and proud people who are just children with disabilities, जो आज बड़े होकर बहुत बहुत महान और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. ठीक है. Okay, so let's talk about what are our roles. हमारा क्या रोल है सोसाइटी में अलग अलग डिसेबिलिटीज जब हम देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं टीचर्स की तरह, हम क्या कर सकते हैं लोग जो एनजीओस चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, उसकी तरह हम क्या कर सकते हैं. अगर हम किसी कैफेटेरिया में बैठे हैं और कोई बड़ा ही अजीब एक्ट, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, मैं बांद्रा में रहती हूँ, मैं बहुत बार देखती हूँ एक्टर्स आकर अजीब एक्टिंग करते हैं कभी कभी, और मन करता है कभी हंसो, वरना कभी कभी मैं सोचती हूँ कितने ब्रेव हैं कि ऐसे आके मतलब सनग्लासेस पहन के बैठे हैं और डांस कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं. तो हम कैसे सोसाइटी उनको इनकरेज करें ताकि वो बड़े हो के बस स्कूल बन जाए. शाहरुख खान क्या क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे ना, बस लाइक कैसे हम ऐसे लोगों को बड़ा करें. सो अब बताइए आप चैट बॉक्स में जाकर, एज एजुकेटर्स हमारे पास क्या आइडियाज आ सकते हैं अगर हमारे पास एक क्लासरूम में डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चा है, एंड कम्युनिटीज में हम क्या कर सकते हैं अगर ऐसा बच्चा है. ये बच्चा हमारे पास डाउन सिंड्रोम के क्या ट्रेट्स होते हैं, ये बच्चे स्पीच बहुत ही अजीब सी होती है, इनकी थिंकिंग, इनकी इंटेलेक्ट बहुत कभी कभी लो होती है, इनकी बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खाने में कभी कभी बहुत ज्यादा खाते हैं, कभी कुछ नहीं खाते, तो इनकी बहुत अलग अलग तरह की कोमॉर्बिडिटीज आती हैं. आप बताइए अगर डाउन सिंड्रोम के साथ कोई बच्चा हो, एज एजुकेटर्स एंड एज कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं. चैट बॉक्स में जाके आप बताइए. Yes, cerebral palsy, there's all kinds, right? All kinds. अब बताइए अगर हमारे पास डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो तो हम क्या कर सकते हैं as people who care about people with disabilities. एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, विक्टोरिया सीक्रेट की मॉडल बन गई है, और क्या कर सकते हैं.
remember, as a society, we have to be as creative as possible when we are working with disabilities to turn it from a dis to an ability. तो हमारा क्या रोल है, क्या कर सकते हैं? Oh, I love that. उनको एक्टिंग में डाल दो, कुछ भी अजीब अजीब उनको डांस करा दो, कुछ भी अजीब अजीब उन्हें लाइक कुछ भी करा दो, फनी बना दो, because these kids have a great sense of humor. I have some kids जो बहुत हंसाते हैं मेरे को, डाउन सिंड्रोम वाले. एक मेरा बच्चा था जय, मतलब मैं स्कूल पढ़ाने इसलिए जाती थी क्योंकि मेरे को इतना हंसाता था. पेंटिंग में डाल सकते हैं, अगर हम उन्हें देखें कि वो बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं, उनको खूब सुंदर पेंटिंग करा दो, उनका आर्ट एग्जीबिशन लगवा दो, बहुत अच्छी सी किसी रेस्टोरेंट को बुक करके उनका पूरा आर्ट लगवा दो और उस बच्चे को हीरो की तरह खड़ा कर दो. वेरी नाइस. और क्या कर सकते हैं? सोचो डाउन सिंड्रोम का बच्चा है हमारे पास, आर्ट एंड एजुकेशन इंडस्ट्री, सबसे पहले कंफर्टेबल फील कराओ, जो करना है करो, जो बोलना है बोलो. जब बच्चे होते कुछ भी कर सकते हैं, उसको ड्रम्स बजाना है ड्रम्स बजाए. बड़े होके हम थोड़े जजमेंटल हो जाते हैं, बच्चे होते हैं तो कुछ भी करा दो, है ना. बिल्कुल, उसको बिल्कुल कंफर्टेबल कराओ. और वन मोर आंसर, फिर मैं आगे चल. मॉडलिंग करा दो, डांसिंग करा दो, आर्ट करा दो. मेरा एक बच्चा था, उसको वो बहुत मतलब उसको ओरल फिक्सेशन से उसको कुछ ना कुछ कभी हमेशा अपने मुंह में डालना था. तो हमने उसको ट्रम्पेट दिया, फ्लूट दिया, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. शेफ बना दो. एग्जैक्टली उनको खाने का बहुत शौक है तो उनको शेफ बना दो. बिल्कुल 100%. डाउन सिंड्रोम के बच्चों को बहुत अच्छा लगता है खाना पीना, तो उनको शेफ बना दिया. कुछ भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दे दिया, वो कभी कभी म्यूजिक अच्छा कर लेते हैं. Amazing. So I'll go back here. डाउन सिंड्रोम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो वो इंटेलेक्चुअली कभी कभी कम सोचते हैं पर बहुत हंसाते हैं, बहुत मजाक कर सकते हैं. दूसरी चीज, उनकी शक्ल कभी कभी अजीब होती है, मतलब अजीब नहीं पर कभी उनकी नाक थोड़ी सी अपटर्न्ड होती है, आईज मंगोल्स होती हैं, उनकी कभी कभी टीथ डिफरेंट स्टाइल के होते हैं. तो sometimes it's good to get them self-aware that this is how you look, and are you happy with this? Would you want to look any different? Would you want to, like, sometimes when I work with kids with Down syndrome, I haven't worked with them recently, but when I work with them, I take them to fashion magazines. I'm like, oh, look at this and look at that. Oh, look at this. Look at Cindy Crawford. She's looking so pretty. Look at this one, right? So I expose them to the world, not asking them to change, but just expose them to people who are beautiful, people who are very well dressed and all of that, right? Because ये बच्चे देख सकते हैं, इनको समझ आता है. तो कभी कभी I expose them that all of this is possible in the world. अगर तुम्हें करना है कुछ तो कर लो, है ना? So that's number one. And number two is compensate abilities with like उनकी जो disability है वो intellectually, emotionally थोड़े stunted होते हैं. Compensate it with giftedness, right? So teach them art, teach them science, teach them music, make them a chef, whatever else it is. And then sometimes people stop paying attention to what they look like, but their actual talent, right? Like no one cares about what Ray Charles look like, or what Hannah Gadsby looks like, or what Barkha Dutt looks like. हम देखते हैं क्योंकि बरखा दत्त की ऐसी शक्ल है, वैसी शक्ल है, हम देख के वो न्यूज़ क्या पर बता रही है. So that becomes more important. So compensating sometimes helps for the actual disability that they might have, and exposing them to this is the world of all kinds of men and women. अगर तुम्हें अपनी appearance पे काम करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, chill, जो करना है करो, है ना?
तो बचपन में हम ये सारी चीजें सिखा सकते हैं, बड़े होकर बिल्कुल नहीं, है ना? जब तक वो छोटे होते हैं तब तक we can work on all of this. Next is a deaf and dumb child, right? Like we see so much talent in the world from people who are like, we've seen movies like Black, where we've seen how beautifully Priyanka Chopra has portrayed somebody who's been blind, or like with other things, right? Like for deaf and dumb, sorry, but we've seen. So what do you think we can do with a deaf and dumb child? I'll be honest, only when I was 6 or 7, I worked, like played, learned cycling with deaf and dumb kids. I haven't worked with too many deaf and dumb kids. So if you all have ideas, I'd love to hear on deaf and dumb children. What do you think we can do as a society? 2 minute लेके आप chat box में लिखिए. कोई भी ideas, कुछ भी. As a society, we should be taught in school Indian Sign Language. Totally, I love that idea. I also feel like as a society, like long ago, hundreds and hundreds and hundreds of years ago, हमारे पास words नहीं थे, है ना? जैसे एडम और ईव के जमाने से, animals के जमाने से, what to gender, we didn't have words. We just had symbols that we worked with, and then my men started to create words. So as a society, even if we're not taught the Indian Sign Language, if I see somebody who is deaf or dumb, I can inherently know how to communicate, right? Like, stop, I love you, what are you saying, right? Like these are things which, if we want to, can instinctually come to us rather than it being made a subject. The more we make things compulsory, in my perspective, the more we lose the inherent willingness to wanting to do something. What else can we, what can you do with deaf and dumb children? There's so many. Give me some ideas. Any idea? I'll wait 2 minutes. Exposure, totally. We should be exposing ourselves to deaf and dumb people and learning how to navigate through it. मतलब अगर किसी को, if like someone wants to be friends with me and I'm deaf and dumb, then they will make the effort to learn sign language. If somebody wants to date me and I'm deaf and dumb, they will make an effort to deeply learn deaf and dumb language, है ना? तो मतलब sign language. So effort is different. If someone's sitting in a cafe and there's someone who's deaf and dumb, I can just be like, hey, looking good, whatever. But if somebody wants to develop a friendship with me, they might need to learn other things. But as educators, you guys, what do you think? What are some creative things we can do with deaf and dumb people? Any ideas? Oh, I love that. Love it, right? Like just the whole world is alive in front of their eyes. How do we just teach them how to? I love that Vidya Bhawan Society, beautiful, right? Like, how do you just teach them to absorb the whole world and put it into writing? Beautiful writing, amazing, love it. What else?
एक्चुअली जब कोविड के थ्रू मैंने मेरी बुक लिखी थी डिजेर्टो फ्लोरिडो, तो मैंने 2 साल किसी से कुछ बात नहीं करी। मैंने 2 साल बस राइटिंग करी, बस क्वाइटली पूरी दुनिया में मैंने जितनी भी स्टोरी सुनी थी सब मैंने फर्स्ट पर्सन में लिखी हैं. So I love that idea कि just like make them erupt the world out in the form of writing or a musical instrument or teach them sports, right? Exactly, dance, visual forms, swimming, make them like the Michael Phelps of tomorrow. To be Michael Phelps, you don't need to learn to speak. You're just swimming. Make them a star footballer. All you need is your eyes and you're on it. The musicians who are deaf, make them a tennis star. All you need is like your ability, eye-hand coordination. हाँ, है ना? तो मतलब उनके कुछ भी सिखा सकते हैं. टेनिस सिखा दिया, म्यूजिक सिखा दिया, आर्ट पेंटिंग सिखा दी, राइटिंग सिखा दी, डांस सिखा दिया, कुछ भी. तो जब हम देखते हैं किसी में कुछ कमी है, जैसे वो सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग दैट टू कम अलाइव, हम एज अ सोसाइटी हाउ कैन वी रीडायरेक्ट इट, मतलब उनको दूसरी डायरेक्शन में ले जाओ कि कोई बात नहीं, सुन नहीं सकते कोई बात नहीं, देख बोल नहीं सकते कोई बात नहीं, कर क्या सकते हो उस पर फोकस करते हैं, ताकि तुम पैसे कमाओ, ताकि तुम्हारा नाम बढ़ाओ, ताकि जिसको तुमसे दोस्ती करनी है वो कर ले, है ना? तो हमारा रोल एज एजुकेटर्स एंड एज कम्युनिटी इज ये नहीं कि मतलब हम पूरी दुनिया को साइन लैंग्वेज सिखा दें, हम उनको कैसे ऐसा बनाएं कि कोई केयर भी नहीं करे, उनको बोलना आता है कि सुनना आता है कि नहीं आता, बस हम उन्हें देखें और बोले वाओ, like now that is talent. So that's what I kind of sometimes think we can redirect focus from the disability to an actual ability. वो बहुत important है, this kind of redirection. Amazing. All right, that was great. Let's move on next. Again, I won't spend too much time on blindness, but give me ideas. What can you do with blindness? हमने Ray Charles देखा था playing the piano. He's blind, like just totally mesmerizing. मतलब सब लोग, पूरी audience देख रही है, वो बिल्कुल blind है and he's playing music. और ideas है, बताओ क्या कर सकते हैं अगर कोई blind हो तो? Let's see. एक दो कोई अच्छे आइडियाज दो मेरे को, अगर कोई ब्लाइंड हो तो हम क्या कर सकते हैं? Maybe like get a surgery, like I don't know, but I feel like we could try when they're children. Our first attempt can be अगर उनको surgery हो सकती है, कोई eye donation दे दे. हाँ, totally, like we can make them YouTubers, bloggers, musicians. But again, I'm also wondering, why not fix it? है ना? अगर उनके blindness है तो उनको eyes दे सकते हैं ना, हम पता कर सकते हैं, we can try. बिल्कुल हम ये सब कर सकते हैं, but like my first instinct is also, can we fix it? है ना? Like if I had a student who had blindness, I'd be like, let me write a letter to like the top foundation in the world and be like, what can we do to actually figure out a way, like write to the top surgeons, top doctors and be like, can we kind of try to figure out a way out of his blindness? And then like maybe if one American doctor can do it, then lots of Indian doctors also start doing it, है ना? And maybe like that we can actually start to cure blindness. तभी the countries also get strong. अगर एक अमेरिका से आइडिया आ गया इंडिया और हमने सक्सेस देख लिया तो सारे इंडियन डॉक्टर्स बोलेंगे अच्छा वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. And then maybe like thousands of Indian doctors start to cure some of these physical disabilities like blindness, deafness, dumbness. So that's another way to look at it. As educators, as community people, हमारा job है teach करना,
बट हमारा जॉब इक्वली है एडवोकेसी करना। एडवोकेसी का मतलब है हम कैसे जुगाड़ू बनते रहें, कैसे हम बड़े बड़े अथॉरिटीज के पास जाते रहें और बोलते रहें कि इसको ठीक करो, इसको फिक्स करो, रादर देन इसको टूटा रहने दो। So that is another way to look at some of these curable physical disabilities. I'm going to put it in the chat. It is curable physical disabilities. It isn't as people who are educators, as people who live in communities. जब मेरे पास ऑटिज्म के साथ बच्चा आता है, मैं सोसाइटी से नहीं कहती चेंज करो, अगर वो वायलेंट हो रहा है वो हो रहा है, लोगों को डर लग रहा है तो डर लग रहा है, पर हमारा जॉब समटाइम्स एज एजुकेटर्स इज आल्सो टू यूज ऑल आवर स्ट्रेंथ टू वर्क अराउंड द प्रॉब्लम, है ना। उस बच्चे को अगर हम बचपन में आइस किसी तरह कुछ करके दिला सकते हैं तो व्हाई नॉट डू इट। So early intervention can see multiple layers. Yes, हम उसको आर्ट सिखा सकते हैं, yes music, yes dance, yes YouTuber, blogger, but yes, why not contact Stanford Hospital or like you know, St. Luke's Hospital, whatever, like the best hospital that we can think of, and NHS in the UK, and tell them, hey, this Indian child, we want to see if you can help us, and see if it works out in some way. I don't know. It's just an idea. I always do that. Like when I have kids that I work with, I sometimes have written to Obama, I've written to, you know, some of the top people in the world to build advocacy for my kids. And I don't care if their name is big, small, kitne famous hai, kitna paisa hai. As an educator, I always hustle my way to the top. Without ever thinking about it, and without ever thinking I'm less because I teach kids who are on the spectrum of autism. Next is my favorite subject, autism. सबसे पहले आप बताइए इसको कौन मेरे को यहाँ पे बता डिफाइन कर सकते हैं ऑटिज्म क्या है। कोई भी चैट बॉक्स में आप मेरे को बताओ, हाउ डू यू डिफाइन ऑटिज्म। Just two answers. What is autism? There are no wrong answers. कोई भी आप जो भी आंसर देना चाहो आप दे सकते हो। ऑटिज्म क्या होता है? I'll work 30 seconds. Wait 30 seconds. Okay, I will explain what is autism. Autism is जब बच्चे जो autism के साथ पैदा होते हैं, autism is a spectrum where there are many different conditions from lack of social skills to speech. Kashala said it's a developmental disorder that impairs the ability to communicate and interact. इसमें बच्चों के सामाजिक संबंध नहीं बनाता है, बिल्कुल ठीक। All of these are absolutely accurate, they're correct, right? I studied the subject of autism, and autism mind is ये अपने आप में मग्न रहते हैं, बिल्कुल ये सब बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरी डेफिनेशन में ऑटिज्म है जब ये बच्चे पैदा होते हैं, इनका दिमाग अब खूब सारे जैसे ब्रांचेस होती है ब्रेन में, उनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। वो डेंड्राइट्स जाके एक साइनेप्स में मिलते हैं,
साइनैप्स होते हैं, जैसे आप इमेजिन करिए खूब सारे तार जाके एक शॉक पॉइंट पे मिल रहे हैं। नॉर्मल ब्रेन में ये डिवाइडेड होते हैं, ऑटिस्टिक ब्रेन में ये खूब सारे जाकर एक जगह पर मिलते हैं। अब उसमें क्या होता है, हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं उस एरिया में, उस इशू के बारे में हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जैसे हम कोई लाउड साउंड सुनते हैं तो वो साइनैप्स बहुत तेज लगता है, तो हम उससे बिल्कुल दूर रह के बाकी सारी चीजों पे फोकस करते हैं। या कोई मतलब अगर हमारे को कुछ खाने का, कोई भी हार्ड खाने की चीज हो, उससे डर लगता है, तो वो वाला साइनैप्स ऐसा लगता है जैसे कोई कोई शॉक लग रहा है, तो हम सबसे डरने लग जाते हैं और अपने शेल में रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ पर वो खाने की चीज दिख जाए, है ना। या हाँ, या अगर हमारे को जैसे कपड़ों में कभी कभी टैग होता है, उससे हमारे को बहुत ज्यादा डर लगता है, तो ये बच्चे बिल्कुल मतलब बिना कपड़े पहन के कोने में बिल्कुल अपने साथ खेलते रहते हैं, क्योंकि उनको बहुत डर बैठ गया है कि टैग नहीं छुप जाए मुझे, राइट। सो सो ऑटिज्म इज समटाइम्स एक एरिया इतना सेंसिटिव हो जाता है, इतना ज्यादा सेंसिटिव, कि हम बाकी एरियाज में छुपे रहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ, हम कभी दुनिया में नहीं निकल सकते, और हम इधर भी इतने गार्डेड रहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि यहाँ पे ये नहीं मिल जाए, वहां पे ये नहीं मिल जाए, वहां पे ये नहीं मिल जाए ना। तो हमारा मतलब इंट्रिंसिकली हम बहुत ज्यादा वाइल्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा डर लगता है कि कहाँ मैं जाऊं, कहाँ छुपूं। ये अपने आप बिल्कुल, तो ये इसलिए अपने आप में मग्न रहते हैं, क्योंकि इनके कुछ ब्रेन के पार्ट इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि इन्हें डर बैठ जाता है, और वो इस डर से निकलने के लिए या तो वो उस डर के थ्रू ब्रेकआउट करते हैं या फिर छुपे रहते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑटिज्म। व्हेन यू मीट दीज किड्स वेरी अर्ली ऑन, आप देखोगे किसी से बात नहीं कर रहे हैं, एक ही चीज के साथ खेले जा रहे हैं, बिल्कुल मतलब स्टबर्न हो रहे हैं कि मैं इधर जाऊंगा ही नहीं, मैं इधर ही रहूंगा। इट इज बिकॉज उनके जो साइनेप्सेस हैं उनसे उनको इतना डर लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे गया तो मतलब ऐसा ऑलमोस्ट है कि मेरे को भूत खा जाएगा, है ना। तो अगर आपके आपके मैं सारी तरफ भूत लगा दूं तो आप भी छुपे रहोगे ना। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, ऑटिज्म इज अ डीप 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 फियर. Now, what you need to do is when you meet a child who's on the spectrum of autism, we simply have to, when they're children, push them to, to move past their fears. है ना, हम उनको पुश करते रहेंगे ताकि वो अपने जिस भी चीज से वो डर रहे उसके थ्रू निकल जाए। अगर वो बचपन में उसके थ्रू निकल जाते हैं तो वो वो बड़े होके जीनियसेस बन सकते हैं। पर अगर हम बचपन में उनको पुश नहीं कर सकते, अगर हम उनकी यही बिहेवियर्स इनेबल करते रहेंगे पूरे टाइम, तो हम उनको शेल में ही रखेंगे। मेनी टाइम्स एज कम्युनिटी, एज एजुकेटर्स, व्हाट वी डू इज, अगर वो लेगो के साथ खेल रहा है, उसको लेगो ही देंगे, पूरे टाइम लेगो के साथ खेलता रहेगा खेलता रहेगा खेलता रहेगा, और वो डेवलप नहीं हो पाएगा। And sometimes that's good, right? Like maybe they become Lego stars, but at the cost of losing the entire world to it. What we can do is help them as children develop globally, develop holistically. अगर मैं बोलूं मेरे घर में भूत है, तो ये थोड़ी कि मैं रोड पे रहूंगी, आप मेरे को इनकरेज करोगे कि नहीं घर में जाओ, देखो, एक महीने रह के देखो भूत दिखा क्या, कोई भूत है क्या। लाइक दैट वी नीड टू समटाइम्स push our children with autism past their fears. So when I work with kids on the spectrum of autism, मैं उनको सोसाइटी से डर लगता है, बाहर जाने से डर लगता है, खाने से डर लगता है, पढ़ाई करने से डर लगता है, हर चीज से वो कांप के कोने में बैठ जाते हैं। मैं उनको पकड़ के बाहर ले जाती हूँ, क्या कॉफी शॉप में बिठाती हूँ, म्यूजियम ले जाती हूँ, रेस्टोरेंट में बिठाती हूँ, पढ़ाई कराती हूँ, लिखाती हूँ, ताकि वो अपने फियर्स के पास्ट जाते रहें, है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को पुश करते रहें ताकि वो बड़े होकर होल ह्यूमन बीइंग्स बने, डरे हुए सिर्फ एक चीज नहीं करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक फेमिनिज्म, राइट? यू मेक देम वेरी ब्रेव एंड मेक देम पुश पास्ट। ऑटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं इसमें एक और मिनट स्पेंड करूंगी, क्योंकि जो ऑटिज्म
होता है वो physically कोई problem नहीं है. It is all about the brain. Autism brain is almost like a balloon. You can keep filling it, keep filling it, keep filling it with as much knowledge, intelligence, skills when they're children, and help them globally become so big that when they grow up as whole human beings. Many times what we do is we get so scared of their fear and their anxiety and their tantrums कि हम उन्हें बचाते रहते हैं, है ना? तो जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसको स्विमिंग सिखानी, आप कभी कभी उसको समुद्र में फेंक देते हो, कभी कभी उसको पूल के डीप साइड में फेंक देते हो. अगर हम ऑटिज्म में एज एडुकेटर्स बिकम ब्रेव लाइक दैट कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, तुम कूदो, we will help them grow globally as children, and when they become adults they're globally developed adults. Does that make sense? So autism is completely in the growth of a mind. We can create geniuses. अगर आप गूगल करो दुनिया में कितने लोग ऑटिज्म में geniuses हैं, आप लिस्ट पढ़ते रहोगे and you will be shocked कि हमारी दुनिया में सबसे बड़े geniuses ऑटिज्म में थे, because it's just about filling the mind, completely filling it rather than restricting it. तो abundance बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है? Any thoughts here? Pause for a minute. विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या जो बातचीत करने और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है, बिल्कुल. और हम इसको बिल्कुल बचपन में अगर मिलें, अर्ली इंटरवेंशन करें, तो हम इसको बिल्कुल ग्लोबली ग्रो कर सकते हैं. 100%. It is a spectrum. We can keep pushing kids past that. All right, next on our slide is, sorry, we've done blindness. Physical disabilities. Give me ideas of physical disabilities में हम क्या कर सकते हैं. अगर कोई बच्चे के physical disabilities हो, हम क्या कर सकते हैं? उनका हाथ टूटा हुआ हो, बचपन में सेरेब्रल पॉल्सी हो, other things like that. Give me ideas. क्या कर सकते हैं हम? एक दो आइडियाज आप दो, कोई क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव आइडियाज. तो हम क्या कर सकते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ? कोई बचपन में बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर कट गए हो, क्या करें? बताओ आप आइडियाज. Great. Leverage the power of digital accessibility, features to provide autonomy. Totally. Arts, oh, I love that. Totally, like make them like physically, you know, Stephen Hawking, right? Like genius, was like fully like physically in a wheelchair, but like is known for what he's created in the field of science and physics. Totally, athletes who are like Nike is all about promoting athletes who've been physically disabled. Art से जोड़ना जैसे story. Nick Wolbeck, who is like a TED talker. When I was going to go to a boarding school, जब मैं 10 साल की थी, तब एक पूरा जयपुर में थी, तब मैं 2-3 साल के लिए, मेरा फैमिली का घर वहाँ है, और एक बहुत मतलब जयपुर का सबसे बड़ा जो कोचिंग सेंटर था, that was run by a woman who was a pilot, and one day she was standing by the plane and the plane's propellers cut her right arm and right leg when she was like 28 or something, married.
and she was in a wheelchair. और सबसे बड़ा उन्होंने जयपुर का कोचिंग सेंटर चालू किया, स्कूल चालू किया, सब कुछ, and she was fully physically disabled. She was in a wheelchair. We can make them feel like they're normal children. We can even get them like artificial limbs. Totally उसको दूसरी क्षमता को विकसित करने की अवसर दें. बिल्कुल गाना गा सकता है, कुछ भी कर सकता है. मतलब हम कभी कभी जब डिसेबिलिटीज को देखते हैं, हमारा सबसे फर्स्ट रिएक्शन होता है बेचारा. जैसे ही हम ये बेचारा माइंडसेट हमारे दुनिया में, हमारी कंट्री में, स्पेशली इंडिया में, हम हर चीज को बेचारा माइंडसेट, पिटी माइंडसेट, चैरिटी माइंडसेट से देखते हैं. जैसे ही हम ये माइंडसेट चेंज करेंगे और हम स्ट्रेंथ की तरह देखने लगे कि तुम तो हीरो बनोगे, लाइक कोई क्लास में फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं, लाइक ग्रेड्स डोंट मैटर, जीरो आ रहा है तो आ रहा है. Mark Zuckerberg dropped out of school. Elon Musk fought with his father, fought with his whole family, and now he like did one of the biggest $1 billion deals. मतलब हम कैसे, जब हम कोई कमी देखें उसको बेचारा नहीं सोचें, पर हम सोचें दूसरे एरियाज में उसको कैसे बिल्कुल बढ़ा दें, है ना. तो हमारी जिंदगी में जब हम बच्चों के साथ डिसेबिलिटीज के साथ काम करते हैं, तो हमें ये नहीं लगना चाहिए पुअर थिंग, वल्नरेबिलिटी. लाइक यू नो, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल ऑन दिस कॉल. मैंने आप लोगों के नाम और आपका काम देखा है. कभी कभी हमें वल्नरेबिलिटी को देख के दया आती है. उसकी जगह हमें ये कैसे सोचे कि उसको स्ट्रेंथन करें, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स अ स्ट्रॉन्ग कंट्री. वी हैव टू make our weakest links as strong as possible. So I'll put it down again here. We have to make our weakest links strong. मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे इस कॉल पे अभी 11 लोग हैं, पर अगर कोई यू नो बॉलीवुड स्टार सोनाक्षी सन्हा आके अभी यहाँ पे अगर डांस कर रही होती तो यहाँ पे 1 मिलियन लोग होते. क्योंकि as a country, we don't think about people who are disadvantaged. How do we start as a community of even 11 people, or like maybe 50 people finally watch this? How do we walk out thinking, जितने भी लोगों में किसी में कमी दिखे बच्चों में, हम उनको सुपरस्टार्स बना दे तो क्या हो सकता है. बिल्कुल उसके आत्मविश्वास को बढ़ाकर उसके अंदर की कमी की भावना से निकाल के सहायता करें. 100% बिल्कुल. और ये सब बच्चों में हो सकती है, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं उनमें ईगो हो जाती है, किसी की मदद नहीं चाहिए, मेरे को बेचारा मत समझो, मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मेरे को टच मत करो, है ना. और जब वो छोटे बच्चे होते हैं तब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा दें और बिल्कुल फुल कर दें, तो बड़े होके वो हीरो बनते हैं. सो दैट्स व्हाई अर्ली इंटरवेंशन इज द key always, right? So let's always think when we catch them young, like Messi. Who watches football here? यहाँ पे आप लोगों में से, Kushal, I know you must be watching football, but I'm sure like a lot of the other people also watch football. ये football stars, Premier League वाले जो football stars होते हैं, उनको हम कभी कभी like किसी विलेज में देखते हैं, कोई बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा है और उसको हम रिक्रूट कर लेते हैं कि तुम आके अब हमारी फुटबॉल टीम में इंग्लैंड में खेलोगे, राइट. एंड देन लाइक टुडे मेसी इज लाइक द वर्ल्ड famous. Ronaldo, Messi, all of these people are world famous because they were just caught young and put into the big league. हमें हमारे बच्चों के लिए ऐसे सोचना चाहिए, लाइक कैसे उनको छोटे में पकड़े और बड़ा हीरो बनाते. ठीक है, बिल्कुल. लाइक जब मैं बच्चों को देखती हूँ जिन थोड़े से quirky होते हैं, जिनमें कुछ अलग होता है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ क्योंकि आई इन्वेस्ट इन देम कि वो बड़े होके बिल्कुल रॉक स्टार्स बन जाए. बस. नेक्स्ट बहुत इजी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज. मतलब मैं इस पे टाइम भी नहीं स्पेंड करूंगी. लर्निंग डिसेबिलिटीज आर, अगर किसी की डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, कोई बच्चे को लिखना नहीं आता, उससे बोलो बेटा तुम लिखते रहो, जब तक सीखोगे नहीं, लिखते रहो. जिंदगी में पढ़ाई लिखाई के बिना या तो फिर डांस करो, गाना करो, बट अगर तुम्हें अपनी कोई लाइक डिसलेक्सिया सॉल्व करना है, ADHD सॉल्व करना है, तो उसके करते रहोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा.
जितने बच्चे मेरे पास आए जिनके डिसलेक्सिया है, जो स्पेलिंग्स नहीं ठीक से लिख सकते, मैं उनसे बोलती हूँ लिखते रहो या फिर कोई शॉर्टकट लो, राइट? लाइक शॉर्टकट्स में भी बहुत हम स्मार्ट हो जाते हैं कि किसी अपने फ्रेंड को बोलो कि अब तुम मेरा पेपर लिखो, या कोई बॉयफ्रेंड बनाओ जो बहुत स्मार्ट है, जो तुम्हारे लिए सारा काम कर देगा, वो भी स्मार्टनेस है, श्योर। बट अगर एग्जाम पास करना है तो बेटा लिखना तो पड़ेगा ही, या स्कूल छोड़ के कोई और जॉब करो, उससे पैसे बनाओ। बट हम बहुत बड़ी डील बनाते हैं डिसलेक्सिया की, लर्निंग डिसेबिलिटीज की, उनको बहुत इजी है सॉल्व करना। जित वो डर बैठ जाता है कभी कभी लिखने का, मैथ्स करने का, और जितना वो करते रहेंगे वो या तो फिर बहुत अच्छे हो जाएंगे या बहुत अच्छे शॉर्टकट्स बनाने में हो जाएंगे, उपाय बनाने में। तो या तो फिर वो उपाऊ स्मार्ट बन जाए, जुगाड़ू स्मार्ट बन जाए, या हार्ड वर्क स्मार्ट बन जाए, है ना? तो दोनों चीजें अच्छी हैं। तो एज एन एजुकेटर आई एम लाइक, परसों एग्जाम है, तुम्हें डिसलेक्सिया है, तुम्हें डिसग्राफिया है, आई डोंट केयर, एग्जाम है। अब वो बच्चे क्या करें? कुछ बच्चे चीटिंग करते हैं, कुछ बच्चे मतलब पूरा का पूरा किसी से कॉपी कर करके किसी भी तरह लिख देते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं मैं कंप्यूटर पे लिखूंगा, और वो कॉपी पेस्ट कर करके अपने ऐड करते रहते हैं वर्ड्स। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं डायग्राम्स में या ड्राइंग में आंसर्स दे सकता हूँ। कुछ बच्चे सपोर्ट ले लेते हैं कि कैन आई हैव somebody else come and write the paper for me. So like, you either teach kids hard work or you teach kids how to be strategic about shortcuts. Both are good ways in life. Okay? So there are two ways that I work with disabilities. Either you keep working hard till it becomes an ability, or you become chunt and you figure a way to make the world kind of see you as cool. है ना? अब अगर हम देखते हैं कोई एक्टर, लेट्स थिंक ऑफ एन एक्टर, सिद्धांत चौहान या कंगना रनावत, या राइट, लाइक who cares how Kangana Ranaut writes or what she reads? No one cares about who आके कुछ भी बोल देती है, कंट्रोवर्सी हो जाती है ना? तो बस हमें हमें बच्चों को कभी कभी ऐसी कॉन्फिडेंस देनी होती है कि वो स्मार्ट हो जाए, चांट हो जाए, बस. Like I have lots of Italian kids that I work with, French kids that I work with. वो उनको पढ़ाई करनी ही नहीं है, वो उनको कहता है हमें आता ही नहीं है, तो मैं उनको शॉर्टकट्स सिखा देती हूँ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, and that's also sometimes good enough. And last is, and I know it's not a popular point of view, especially in India, जहाँ हम आत्मनिर्भर योगा करें, अच्छी अच्छी चीजें करें, पर अगर हमें इंडिया को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो हमें देखना पड़ेगा दुनिया में लोग कैसे बड़े स्मार्ट हो रहे हैं, और हम कभी कभी पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम बड़े दया माइंडसेट से इन बच्चों को देखते हैं, दया माइंडसेट से पुअर पीपल को देखते हैं, दया माइंडसेट से जिनके घर छोटे होते हैं उन्हें देखते हैं. अगर हम हमारा माइंडसेट चेंज करें तो पूरी कंट्री कैन राइज. वी हैव टू क्रिएट एम्पावरमेंट rather than humanitarian work. That is how I see the difference with working with kids with disabilities. Don't amplify their disabilities, amplify what they can become. Not make poverty cool, but make the fact that they can make the best art or best pottery or best music cool, right? So how do we like switch mindsets is what I think about. So lastly, and this is very complicated, उनको स्वतंत्र से टीचर उनका असेसमेंट उनकी क्षमता के अनुसार करें तो वो हार्ड वर्क करेंगे. एक्चुअली इरफान, मैं यहाँ पे डिसएग्री करूंगी, क्योंकि दुनिया में टेस्ट सबके लिए सेम होता है. आई डोंट गिव एनी अकोमोडेशंस, बट इफ दे समटाइम्स विल यूज शॉर्टकट्स या चीटिंग या कुछ ऐसी चीजें, टेस्ट सेम है, पर तुम किस तरह से वो टेस्ट पास करो, बात वो होती है. Like in life, I think there are nobody's going to make accommodations for them, but how do we sometimes teach them tips to pass the same test? मैं ऐसे डिसेबिलिटीज को देखती हूँ. मैं मेरा जो बच्चे जिसके ऑटिज्म है, मैं उसको ये नहीं कहूंगी तुम
अलग टेस्ट करो क्योंकि तुम्हारे दिमाग अलग है, या कोई जिसकी फिजिकल डिसेबिलिटीज है मैं उसको अलग टेस्ट नहीं दूंगी, मैं उनको अकोमोडेशंस दूंगी कि वो सेम टेस्ट करें पर अपनी तरह से करें. So same test, different ways of doing the same test. बस ये मेरी philosophy. I don't know if people agree or not. So जब मैं a paradigm shift in the approach of teachers, totally. I'm like, guys, like I work with inclusive classrooms where there are all kinds of like minds and ways of working. I'm like, buddy, the test is the same. There is no test which is going to be different. How you pass the test is where I will see your intellect and your intelligence. है ना, सबको सेम टेस्ट होगा, सबको सेम लेवल का बेंचमार्क होगा. तुम कैसे इधर आते हो, दैट इज हाउ यू गोइंग टू ग्रो इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली. सो इससे रेजिलियंस बनती है, इससे ग्रोथ माइंडसेट होता है. हम कभी कभी क्या करते हैं, हम जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं उनको बहुत अकोमोडेशन दे देते हैं, बहुत दया दे देते हैं, तो वो कभी इस लेवल पे एस्पायर करते ही नहीं है, वो इधर ही रह जाते हैं. वो सोचते हैं हमें सब पूरी लाइफ में बेचारे बेचारे करके सब हमारा ध्यान रखते रहेंगे. सो इंस्टेड वी नीड टू पुट देम एट द सेम टेस्ट. That's fully, it's a bad mindset sometimes because kids hate me. They're like, everywhere else we got accommodations, हम इतने लंबे पेपर्स नहीं लिखते थे, हमारे को ये नहीं करना था. I'm like, too bad. यही है टेस्ट. अब तुम कैसे ये पास करोगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बट यही टेस्ट पास करना. So that's my benchmark as a team leader, as the CEO of a company, as anybody, whoever I work with. Lastly, victims of sexual emotional trauma. We meet lots of children. It's not a physical disability, it's not a learning disability, where it becomes like your body starts to hold this trauma that you've been through. If you were a victim of rape, if you've been sexually abused, if you've been physically abused, बहुत ज्यादा हम बच्चे देखते हैं जो आते हैं हमारे पास, जो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनका दिमाग नहीं लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा वो रिलेशनशिप्स नहीं बना सकते, फ्रेंडशिप्स नहीं बना सकते, बिकॉज उनको इतना फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम्स होते हैं, या उनके पेरेंट्स ने बहुत मारा, या कुछ भी हो सकता है. हम ऐसे, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ ऑल, दैट्स व्हाई आई सेव्ड इट फॉर द लास्ट. Ideas though, up kaise as community of educators and other people, how do we deal with this? Totally, हमें किसी का, अगर हम किसी की क्षमता बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो उसको गिराने का काम हमें कभी नहीं करना चाहिए. हमारा रोल एज एजुकेटर्स है उनको बढ़ाते रहो और कभी किसी और डायरेक्शन में देखो ही मत. बड़े होके सोसाइटी उनको तोड़ेगी, उनको मारेगी, उनको सब कुछ करेगी, बट जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं हमें बस उनको बढ़ाते रहना है. तो अब आप मेरे को बताओ, अगर कोई बहुत ज्यादा फिजिकल या सेक्सुअल ट्रॉमा से आ रहा है, एक या दो आंसर्स दीजिए और फिर हम ओपन कर देंगे अगर किसी के पास क्वेश्चन. क्या कर सकते हैं? I'll wait 10 seconds and I'll give an idea and then we'll wrap up. Anyone wants to give an idea कि अगर किसी के कोई sexual physical trauma के साथ बच्चा आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? Zahra, Irfan, RD, Bhagwati, Kunal, does anyone want to? पेरेंट्स से बातचीत करें, साइको एजुकेट करें, घर में कुछ बदलाव लाने के लिए बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप्स देखें.
इमोशनल रैपो, उनको मतलब उनको लगता है कि पूरी सोसाइटी में को मारने के लिए आ रही है। आई लव दैट सहरा, कि उनको कैसे बोलें कि फ्रेंडशिप्स आर सेफ, relationships are safe, love is safe. बिल्कुल। और ये सब हमें उनके बचपन में सिखाना बहुत जरूरी है, ताकि वो बड़े होकर स्ट्रॉन्ग बने और अपने ट्रॉमा के साथ हील कर पाए। टोटली टोटली, आई लव दैट, है ना, कि उनको कैसे बिल्कुल कंफर्टेबल करें। यस, किसी ने तुम्हें मारा, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा ट्रीट किया, ये हो गया है, मुझे समझ आता है, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे माइंड में हमेशा ये स्कार रहेगा। Encourage the child to narrate their experience. Totally, like if the child wants to, some people don't want to share it. Kushal is what I've seen, like many times people are private about this, sometimes they want to share it. So either way, right, like if they want to share their experience and that's what makes them strong, do that. If they want to share other things that will make them feel cool, let them do that. तो उनका मतलब उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत गिर जाती है अगर किसी ने सेक्सुअली अब्यूज किया है, फिजिकली अब्यूज किया है। इफ दे वांट, उनको हम इनकरेज करें कि उसकी स्टोरीज बताएं। इफ दे वांट, हम उन्हें इनकरेज करें कि वो कुछ और स्टोरीज बताएं, कुछ और वे में अपने आप को बड़ा करें फिर से, ताकि सोसाइटी उनको फिर से एम्ब्रेस करने लग जाए। मेरे पास एक बच्चा था, उसका नाम मैं लूंगी नहीं, पर वो चाइनीज बच्चा था। वो जब 3 साल का था, उसको किसी फैमिली ने उसको सेक्सुअली अब्यूज किया था। उसके बाद उसको किसी फॉस्टर होम में डाला, वहां पे उसको बहुत फिजिकली अब्यूज किया, उसकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड जो थी वो टूट गई थी। उसके बाद वो एक और फॉस्टर होम में गया जहाँ पे वो बिल्कुल डिसेबल्ड था, तो उसको और सेक्सुअली अब्यूज किया। और जब वो मेरे पास आया था तब वो 11 साल का था। उसने अपनी इतना उसको सेक्सुअली अब्यूज किया था कि उसने बहुत सारा अपना टाइम बचपन में, मतलब वो जब 7 to 11 years का था, वो पोर्नोग्राफी में बिताया। बहुत ईटिंग डिसऑर्डर था, तो मतलब जब वो 12 साल का था तब उसका वेट होगा 80 किलोज। एंड उसके बाद जब वो स्कूल में आए और उसने देखा सब बच्चे बिल्कुल अलग हैं, तो बिल्कुल उसको मतलब एनोरेक्सिया हो गया, बुलिमिया हो गया। वो अपना खुद का खाना लेके आता था स्कूल, पूरे टाइम उसको वर्कआउट करना था। पढ़ाई में मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आता था, क्योंकि उसके दिमाग में इतना ट्रॉमा बैठा हुआ था। बस वो पूरे टाइम जीसस क्राइस्ट का नाम लेता था, क्योंकि उसको एक अमेरिकन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था जो क्रिश्चियंस थे, और वो बहुत काइंड थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे। तो जैसे उसको किसी चीज में डर लगता था, वो उसको मतलब अपनी बाइबल की चीजें बोलने लग जाता था। सो my work with him was to get the whole class to be like, okay guys, like working out is a cool thing. तो हम सब लोग वर्कआउट करने लग गए, हम सब लोग हेल्दी खाना खाने लग गए, हम सब लोग like understand करने लग गए Christianity, what is Christianity, roots of Christianity. हम सब पढ़ने लग गए stories of history where you know like different kinds of stories about morality, about love, about this, about that. कहानियां लिखने लग गए। और जब उसको इतनी सारी डिफरेंट चीजें मिल गई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो धीरे धीरे जो एम्प्लीफिकेशन था उसका फिजिकल और सेक्सुअल ट्रॉमा का, वो कम होने लग गया, क्योंकि इतनी सारी अलग चीजें उसको डिस्ट्रैक्ट करने लग गई। और स्लोली स्लोली कभी कभी उसको याद आता था, बट 80% लाइक बच्चों के माइंड्स इतने मैल्येबल होते हैं कि 80% ऑफ हिज डे ही वुड फॉरगेट कि उसके 1 year से लेके 11 years तक उसने इतना फिजिकल और सेक्सुअल ट्रॉमा फेस किया था। वो बड़े होकर मतलब पता नहीं कब हाइकिंग करता है, एडवेंचर कैंप्स लीड करता है, ये सब करता है, पर उसका डिमिनिश होने लग गया द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द ट्रॉमा दैट ही वेंट थ्रू। एंड समटाइम्स आवर रोल इज टू distract and fill the minds of these kids with everything else, so that the trauma of sexual and physical abuse that they've gone through will remain, but it will become very small in terms of everything else that goes on in their mind.
So that is another way of thinking about how we can deal with victims of physical and sexual violence. With that, we come to an end of what is a disability. My big thought always remains, how do we not see it as a deficit as an educators group and as a group of community people? How do we start looking at it and thinking in a very like growth mindset that this is interesting, what could I do so that like the idea of the dis just completely goes off by the time the child is 18, and we're actually like, oh my god, like can you imagine एक दिन था जब हमें लगता था ये बच्चा कभी बोल ही नहीं पाएगा, कभी गा ही नहीं पाएगा, कभी चल नहीं पाएगा, और आज वो हीरो बना हुआ है. So let's like think in a hero mindset जब हम बच्चे disabilities के साथ देखते हैं. That has been my work through my life. Today, my kids are supermodels. They've graduated. They're singing at choirs. They're in theater. They're in cinema. Like they're doing all kinds of cool things across the world. अब मैं उनको देखती रहती हूँ और सोचती रहती हूँ क्या मैंने सोचा था कि like ये disabled है. Like I've torn their entire folders and files and thrown them. And now I just see these kids in the world and I'm just like, dude, they're like cool. They're amazing. They have great stories to tell. So that is my bit. And now I will hand it over to you guys for any questions, anything. थैंक यू वेरी मच देवांगना. आपने काफी अच्छे से और काफी गहराई में जाकर डिसेबिलिटी पे और कम्युनिटीज का क्या रोल रहता है डिसेबिलिटी को समझने में और बच्चे जिन्हें डिसेबिलिटी है उन्हें सपोर्ट करने में, इसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल एग्जांपल्स आपने दिया, बहुत ब्यूटीफुली आपने अपनी बात रखी. आई थिंक एक पर्टिकुलर एग्जांपल जो आपने दिया, चैट बॉक्स में कुछ जो स्टाफ थे विद्या भवन के, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था. तो आपने एक बात कही थी कि एज अ टीचर एक बेंचमार्क सेट करना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए. तो कि अगर वो मतलब पेपर तो एक ही रहेगा, असेसमेंट तो एक ही रहेगा, उसको करने के तरीके बहुत सारे अलग अलग अपनाए जा सकते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट विल स्टिक विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज मेरा भी काफी हद तक ये मानना था कि कुछ चेंजेस या कुछ बदलाव जो है असेसमेंट में या असेसमेंट के तरीकों में होने चाहिए, ताकि वहां से इंक्लूसिविटी की प्रैक्टिसेस जो है वो आती हैं. बट आई थिंक जो आपकी बात थी वो एकदम से अलग थी कि नहीं, उससे आप एक ही रखो, लेकिन तरीका उसको अटेंड करने का वो अलग कर सकते हो, राइट? बिल्कुल. So thank you. I mean, this is my perspective. मेरे को पता नहीं, like अगर मैथ्स का पेपर है, बच्चे को बाकी सब आता है, अलजेब्रा नहीं आता, तो वो सेक्शन छोड़ दो, 60 मार्क्स फिर भी आ जाएंगे, है ना? तो like कैसे उनको जुगाड़ू बनाए इन लाइफ. That's how I work with disabilities. बहुत लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है और मेरी खूब लड़ाइयाँ हुई हैं इस बात पे. तो मेरे को नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है, पर as somebody who runs an organization, that's how I look at it. बट देन सो मेरा यही से एक सवाल आता है कि मतलब अगर मैं किस ऐसे बच्चे की बात करूं जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्योंकि आपने मैथ्स का ही उठाया तो डिस्कैल्कुलिया ले लिया या डिसलेक्सिया ले लिया, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि किस तरह से उन बच्चों के साथ काम होना चाहिए, खासतौर पे जब असेसमेंट की बात होती है? चलिए पढ़ाने के तरीके में तो हम डेफिनेटली कई सारी चीजें हम ट्राई कर सकते हैं, बट देन because that very assessment makes the child very nervous. तो फिर क्या किया जाए? So I've asked some of my kids to write complete letters to the dean of the organization, dean of schools, to say, I don't feel comfortable with the subject of maths. Can I actually skip the exam? Can I pick another subject? So I've given them the agency to become advocates for themselves. ठीक है, मैथ्स नहीं, बट इफ यूर इन माय क्लास तो सब ये असेसमेंट है, पर अगर तुम्हें ये सब्जेक्ट नहीं करना तो डू सम एडवोकेसी, नो, लाइक करो अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट, लाइक ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, जॉइन एन ओपन स्कूल. लाइक एज किड्स, हाउ डू वी एम्पावर देम so that no one ever has to make excuses for them, but they become agents of change themselves, is how I look at it.
Okay. So thank you once again. तो साथियों अब आप लाइव चैट बॉक्स में अपने जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें साझा कर सकते हैं। हम उन्हें लेंगे और देवांगना उन पर आपको जानकारी बांटेंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप उसे चैट बॉक्स में कर सकते हैं, रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस अलग से भी आए हैं मेरे पास। जब तक ये चैट बॉक्स में आते हैं, हम उन क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। एक जो पहला क्वेश्चन है वो है कि how can an individual member of society work on supporting people that have disabilities other than just educating themselves about it? तो एजुकेट तो कर लिया मैंने खुद को कि अच्छा ये डिसेबिलिटी है, इस तरह की दिखती है, पर उसके अलावा भी मैं इंडिविजुअल होने के नाते, सोसाइटी का मेंबर होने के नाते जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं जिन्हें डिसेबिलिटी, उन्हें कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ? अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ ना। सपोज आप एक क्वाइट डिनर के लिए रेस्टोरेंट में गए हैं, आपका और आपका हस्बैंड क्वाइटली खाना खा रहे हैं। सडनली वहां पर तापसी पन्नू आ जाती है डिनर के लिए, पूरी पापराजी अंदर आ गई है, आवाज कर रहे हैं, कैमरा हो रहा है, ऑल ऑफ दिस, राइट? Now, as somebody who is eating a dinner with my husband, I have three choices. One is I get excited कि मेरे को तापसी पन्नू से बात करनी है, so I go and I cut through the paparazzi and I make an effort to talk to her. The second is I call the manager and I'm just like, manager, I hate this distraction. Can you do something about it? Third is I just ignore it. The same approach to use with a child with disability. Sometimes I take kids on the spectrum of autism to a cafe. People get very excited. Oh, what a cute, like, cool work that you're doing, Devangana. They'll want to like come and engage. And I'm like, come sit, no, like talk to him. If he throws his shoes at you, too bad. You chose to come and speak to him. The second is they sometimes complain to the manager, and the manager will either tell them be quiet or tell me, Devangana, don't come here. Or the third thing they do is they ignore. So that's exactly how I think as individuals we need to look at kids with disabilities. Right. So with this, I think the second question is also sort of interconnected to the first one. तो दूसरा सवाल है कि एक कम्युनिटी या कोई उस कम्युनिटी पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, स्कूल्स आती हैं, कंपनीज आती हैं। तो इन सभी जो ये व्यवस्था बिठाई गई है कम्युनिटीज में, अलग अलग सर्विसेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर हम कैसे इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर सकते हैं उन बच्चों को जिन्हें डिसेबिलिटी है, उन लोगों को जिन्हें डिसेबिलिटी है? तो किस किस टाइप की इंक्लूसिव, हाँ, किस किस टाइप की इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस हो सकती है? I think to some extent, like, you know how sometimes you can make a place pet friendly, sometimes you can have places which are no children allowed, sometimes you can have places which, you know, that there's a ramp made, sometimes you can have a place like, you know, it's open, anyone can come, if anyone has any complaints, you leave, right? Like as a manager, or sometimes you can train the entire staff on how to deal with people who are deaf and dumb, sign language, autism, all of that. So I feel like it depends from place to place. What kind of a value do we want to portray as an organization, as a restaurant, as a cafe, as an office, and then like kind of work through it. Right. So the third question is, मेरा जो बेटा है उनका ब्रेन जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, बट एज वाइज वो ग्रो कर रहा है। अभी भी वो मुझे हक करता है, और जब वो हक करता है तो वो मेरे ब्रेस्ट्स को भी टच करता है और कदम करता है मेरे साथ, जो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करवा देता है, ऑकवर्ड महसूस करवाता है। तो मैं उसके साथ कैसे डील करूँ? Absolutely. Like, how would you deal if my child, normal child, was holding my breasts and I'm a mother? I would stop him. You know, like sometimes, like my first point was, how do we stop making excuses for kids with disabilities? If a child on the spectrum of autism holds me tight, I will tell him, I will report you to the police right now. And like how do we hold our kids to the same benchmark
अगर मेरा बच्चा मेरे ब्रेस्ट आज छू रहा है, मैं उसको मना करूंगी और बोलूंगी कोई बात नहीं बेटा, ये ऑटिज्म है, चल जाएगा, या ये कुछ और है, वो किसी और वुमन के जाके करेगा, वो किसी और का करेगा, राइट? लाइक we have to be very clear with what is okay and what is not okay. We have to like show him videos of sexual abuse. Tell your child, you are sexually abusing me, I can report you to the cops. And actually, like if he's doing this, send him to the police. चल कोई बात नहीं, डराओ उन्हें, बचपन बचपन से डराओ. Okay. We can't, as mothers, as women, as men, we need to stop making excuses for our children to be doing these things. बट सो यहाँ पे एक सवाल मेरा भी आता है कि क्या इसमें कारण एक ये नहीं है, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि उन्हें बचपन में अर्ली स्टिमुलेशन हम जिसे कहते हैं, शायद वो उन्हें ना मिला हो और वो भी शायद एक कारण रहा हो कि वो स्टिमुलेशन उन्हें चाहिए. तो क्या वहां पर डेफिनेटली जो आप give them clay, give them balls. yeah. Like how do we turn stimming to become appropriate? Yeah. Right? Like I have had kids who wanted to masturbate in class, Yes. and I'll be like, I'll slap your face, like take a pen, go to the bathroom, like figure other ways of stimming which are appropriate in society. Otherwise you will get arrested as an 18-year-old. Or you will go in jail, juvenile delinquency, 100%. सो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वो मैं मानती हूँ कि हम उन्हें शुरू से ये भी बताएंगे, और उसी के साथ ये जो रिसोर्सेज हैं, स्लाइम हुआ या क्ले हुआ, तो इस तरह की चीजें हम उन्हें यूज करने दें. एंड आई थिंक यहाँ पर बॉडी शेमिंग जो बहुत होती है हमारे देश में भी, मतलब नॉट जस्ट विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज बट बॉडी के अराउंड शेमिंग इतनी ज्यादा है. कंसेंट या परमिशन के बारे में हम बातचीत नहीं करते. तो लाइफ स्किल्स एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें इस पे भी बात जब हम बच्चों से करेंगे कि अच्छा मास्टरबेशन क्या है या कंसेंट क्या है या परमिशन क्या है, वो चीज भी जब हम करेंगे तो आई थिंक एक सेंसिबिलिटी जो है वहां से भी आती है. एंड एट द सेम टाइम ये भी पता होता है कि वो स्टिमुलेशन जब चाहिए तो मैं और क्या क्या तरीके जो ट्राई हम कर सकते हैं जो सेफ है, ना सिर्फ मेरे लिए बट सामने वाले के लिए. बिल्कुल राइट. कभी कभी उनको वर्ल्ड में एग्जांपल्स देना कि जब किसी और ने ऐसी चीज की थी तो उनके साथ क्या क्या हुआ है. और जब वो बच्चे होते हैं उनको समझ आता है, बड़े होके भी बिकम लाइक स्टबर्न एंड व्हाटएवर, पर बचपन में उनको सिखाओ कि अगर तुम ऐसे करोगे तो देखो इसके साथ क्या हुआ है, देखो इसके साथ क्या हुआ है. जैसे मैं मेरे बच्चों को स्टोरीज बताती थी, डेट रेप क्या होता है, अजीज अंसारी का केस, जॉनी डेप एम्बर हर्ड का केस, ताकि सारे केसेस मैं मेरे बच्चों के साथ डिस्कस करती हूँ ताकि उनके अंदर अभी से अवेयरनेस बैठ जाए और वो बड़े होकर ऐसी चीजें सोच समझ के करें. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि हम एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम कैसे बनाएं जिन भी लोगों को डिसेबिलिटी है बियॉन्ड कम्युनिटी, जहां से वो खुल के अपना जो पोटेंशियल है वो उसे निखार पाए और बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए अवेलेबल हो पाए. तो अभी तो कई जगह पे बिकॉज काफी रिस्ट्रिक्शंस भी है, इंक्लूसिविटी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जगहों पे एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है, एटीट्यूडल बैरियर्स भी होते हैं. तो हम किस तरह से इनके लिए उस तरह की अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं? I think it's all educators' job. Like I just feel like everything at the end of the day is in an educator's hand. Again, as an educator, we want to create the world for our children. We can, if we are empowered educators. Thus, it's as simple as that. Right. So I think with this, one last question remains. So that question is, कभी कभी मेरे जो कुछ दोस्त हैं या कुछ लोग हैं मेरे आसपास, उन्हें किसी तरह की डिसेबिलिटी है, तो मैं सिर्फ सेंसिटिव होना चाहती हूँ, पर कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं सिंपैथेटिक हो रही हूँ, तो मैं ऐसा महसूस नहीं करवाना चाहती हूँ. तो उसके लिए मतलब वो डिफरेंशिएट मैं कैसे करूँ अपने एक्शंस में, मतलब एज अ कम्युनिटी. Repeat हाँ, एज अ कम्युनिटी मेंबर मैं जो भी जिन्हें भी डिसेबिलिटी है तो उन्हें लेके मैं सेंसिटिव हूँ, बट मैं सिंपैथेटिक नहीं अपने आप को दिखाना चाहती हूँ.
तो मैं कैसे इस चीज में डिफरेंस लेके आ सकती हूँ अपने एटीट्यूड में कि वो मेरा जो अप्रोच है वो सिंपैथेटिक ना लगे कि मैं आई दया थिंक कर रही हूँ ऐसा। मतलब आई थिंक जैसे हम अमेरिकन कोई इंडिया आता है, तो मतलब या तो फिर हमारे से बिल्कुल लाइक अमेरिकन एक्सेंट में बात कर सकते कि हमें समझ ही नहीं आए कि मतलब ये हमारा अप्रोच बिल्कुल लाइक इंडियन ले, और जैसे हमारे लोगों की तरह बात करे, राइट? लाइक there's a saying when in Rome act like the Romans, like how do we, like many times I work with kids who are very different from me, but I sit with them like I'm one of them because I'm sensitive to them. I get it that the society has bullied them, treated them badly, but I'm just like, हाँ भाई बता, what is going on, what you studying? So like I make calm of the sensitivity that I have for these kids. राइट, राइट। थैंक यू वेरी मच देवांगना। आई थिंक चैट बॉक्स में भी काफी पार्टिसिपेंट्स जो हैं स्टाफ मेंबर्स, उन्होंने भी काफी सारी चीजें लिखी हैं अपने कि आज का जो प्रेजेंटेशन है काफी अच्छा रहा, काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सुनने को मिले हैं। और आपका जो वो एग्जांपल था शॉर्टकट वाला या जो तरीके वाला एग्जांपल, वो भी एक स्टाफ मेंबर ने लिखा है कि वो उसके बारे में और सोचेंगे। तो आई थिंक कुछ हद तक थोड़ा माइंड बॉगलिंग भी था सेशन, क्योंकि कुछ नई चीजें जानने को मिली जो शायद थोड़ा थोड़ा जो अभी तक एक बिलीफ सिस्टम बन चुका था उसको थोड़ा सा तोड़ने की या मोड़ने की या स्क्वीज करने की कोशिश हुई है। एंड खास तौर पे जो परिवार जहाँ बच्चों को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, उन्हें काफी मजबूती मिली होगी आज का सेशन अटेंड करके। कई सारी नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर द वंडरफुल सेशन। Thank you for having me. Really, thank you. And मैंने बहुत टाइम बाद हिंदी में सेशन किया और बड़ी मस्ती आई, क्योंकि मेरे को लगता था मैं कर नहीं सकती थी, पर मेरे को भी मेरी डिसेबिलिटी, इतनी अच्छी हिंदी पढ़ी मैंने और इतना अच्छा हिंदी में बोला। Thank you so much for inviting me. Really, thank you. Thank guys. you. Thank you very much. And a special thanks goes to all the participants कि आपने participate किया। Thank you everyone. जहाँ देवांगना आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे या आपके कुछ खुद के क्वेश्चंस हैं, आपने वो पोस्ट किए। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, हम दोबारा मिलेंगे इसी समय 4 से 5:30 बजे एक नए टॉपिक पे अपकमिंग मंडेज को। आप हमें फॉलो करने के लिए जो यूट्यूब चैनल पे आप हैं उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन। धन्यवाद आप सभी का। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू। Thank you. Bye. Thank you everyone. Bye.